वो वक्त आ गया था जिसकी प्रतीक्षा में सजे शादी के मंडप में मौजूद हर किसी को थी। वो वक्त था जयमाल का। ऐश्वर्या राय ने थोड़ा शर्माते हुए अभिषेक बच्चन के गले में वरमाला डाल दी। अब बारी थी अभिषेक की। अभिषेक ने भी ऐश्वर्या की आंखों में आंखें डालकर उनके गले में जयमाल डाल दी। जैसे ही जयमाल की रस्म पूरी हुई, वहां मौजूद मेहमानों ने तालियां बजाकर सदी के सबसे मशहूर शादी के गवाह होने का एहसास दिला दिया। जयमाल की रस्म पूरी होते ही अभिषेक और ऐश्वर्या एक दूसरे के पति पत्नी हो गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जयमाल के बाद इन दोनों की सीट बदल गई। जरा गौर से देखिए, जयमाल से पहले अभिषेक बच्चन दाहिने तरफ बैठे हुए थे और ऐश्वर्या बाईं तरफ। लेकिन जैसा कि हिंदू रस्मों रिवाज से की गई हर शादी में होता है, जयमाल के बाद अभिषेक बाईं तरफ बैठे और ऐश्वर्या दाहिनी तरफ। जयमाल के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या ने एक दूसरे को काफी देर तक गले लगाए रखा। दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी का जयमाल तो आपने देख लिया, लेकिन शादी के 7 फेरे अभी बाकी हैं। सदी की सबसे बड़ी शादी में बधाई देने पहुंचे देश के नामी गिरामी लोग। आइए देखते हैं कौन थे शाही शादी के शाही मेहमान। शादी के बाद शुरू हुआ मेहमानों से गले लगने का सिलसिला, दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद देने का सिलसिला, शादी की बधाई देने का सिलसिला। ऐश्वर्या और अभिषेक को शादी के बाद आशीर्वाद देने पहुंची अभिषेक बच्चन की नानी यानी जया बच्चन की मां। आशीर्वाद देने वालों में अमिताभ बच्चन के मुंह बोले छोटे भाई अमर सिंह भी शामिल थे। ये देखिए, दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए अमर सिंह को। ऐश्वर्या और अभिषेक ने अमर सिंह के भी पैर छुए। अमिताभ बच्चन ने भी अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। अमिताभ ने अपने बेस्ट फ्रेंड और बेटे अभिषेक के सिर पर सजे सेहरे को भी थोड़ा और ठीक से सजा दिया।
अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन भी नए जोड़े को बधाई देने पहुंची। और इसके बाद शुरू हो गया ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन को बधाई देने का ना थमने वाला सिलसिला। स्टार न्यूज़ रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कैसे पूरी हुई थी ऐश्वर्या और अभिषेक के 7 फेरों की ये रस्म। कहते हैं बिना 7 फेरे के शादी पूरी नहीं होती है, इसलिए जयमाल के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक को भी शादी के 7 फेरे लेने पड़े। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की। अभिषेक आगे आगे और ऐश्वर्या पीछे पीछे। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी भले ही सदी की सबसे मशहूर शादी रही, लेकिन शादी के रस्मों रिवाज बिल्कुल वही थे जो एक आम इंसान की शादी में निभाए जाते हैं। सात फेरे लेने के बाद अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय का कितना ख्याल रखने लगे, इन तस्वीरों में देखिए। सात फेरे लेने के बाद पंडित जी ने दोनों को प्रसाद दिया और बहुत ही श्रद्धा के साथ अभिषेक ने जल के रूप में मिले प्रसाद को ग्रहण कर लिया। यही नहीं, अपने भीगे हुए हाथ को अपने बालों में पोंछ लिया, ठीक उसी तरह जैसे एक आम इंसान करता है। इस दौरान ऐश्वर्या अभिषेक के कानों में कुछ कहती भी रही और दोनों लगातार कुछ न कुछ गुफ्तगू भी करते रहे। सात फेरे पूरे होने के बाद बारी आई फैमिली फोटोग्राफ की। दूल्हा दुल्हन के साथ सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंचे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के माता पिता। ऐश्वर्या की तरफ अमिताभ और जया खड़ी हुई और अभिषेक की तरफ ऐश्वर्या की मां वृंदा राय, पिता कृष्णराज राय। इसका मतलब हुआ कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू बन गई और अभिषेक राय खानदान के दामाद। स्टार न्यूज़ रिपोर्ट। और आइए जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं शादी की खास तस्वीरों के साथ। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियां ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियां ओ सजना, हो रुखी रे वो रुखी रे, कांटू रे काटे कटे ना, तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियां
बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना हो
के लोगों की निगाहें इस दिन इसी जोड़ी पर लगी थी। घर से निकली बारात, घोड़ी पर सवार थे अभिषेक और पगड़ी सजाए अमिताभ हर बाराती की खिदमत में जुटे थे। और फिर वो घड़ी आ ही गई जब दिलवाले दुल्हनिया लेने पहुंच गए। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस शादी की खुशी तो होगी, लेकिन साथ ही था अफसोस भी। अफसोस इस बात का कि आखिर बॉलीवुड के शहंशाह ने उन्हें बाराती बनने का न्योता क्यों नहीं दिया। आखिर वो क्यों इस सदी की सबसे बड़ी Real weddings, real weddings. It's like playing Spot the Difference. It's the most eligible, and if she is the most beautiful, we are happy that they're joining together. That was Amitabh Bachchan post the mega engagement announcement. And recently we saw the usually reticent Jaya Bachchan gushing about her son's chosen bride. She is perfect. I don't think we need to give her any advice. Being as loving and as dignified as she is. You know I've always loved her. So what makes Aishwarya Rai perfect for the coveted spot that many had eyed? For starters, her icy, plastic image has very well worked in her favour. For the Bachchans, what happens behind closed doors stays there, and Aishwarya has never been one to wash her dirty linen in public. One thing which we have to give the actress is that she always has been dignified about her conduct. Over the past months, in her many public appearances with the Bachchan family, Ash has been the very picture of a dutiful daughter-in-law. Amit ji, the minute he sees her, it's like looking at Shweta coming home. You know, I think she'll fill the vacuum that Shweta left. And of course, the fact that Ash herself is a national and international brand to reckon with, along with being one of the top actresses in India, would have only helped the cause further. Entertainment Bureau, Times Now. After the exotic grand celebrations after Mehendi and Sangeet, now it's time for the big day. Yes, the wedding day is right here, and the place, the venue is Pratik Shah, Amitabh Bachchan's bungalow in Juhu, where the wedding celebrations will take place. The Bharat is supposed to leave Jalsa at about 4:30 and reach here. Aishwarya Rai is already inside. She came in a silver-colored Bentley, fully adorned with beautiful flowers. The fans are increasing by numbers. They are just multiplying in leaps and bounds. They are coming here to take a look, to just witness the entire event. In fact, we are just spying over here because we are not being able to get many visuals other than the outside. As you can see, the venue is being decorated with flowers, and there is a tight security outside as well. In fact, we do hear that there are speculations that probably Amitabh Bachchan, the private man that he is, he doesn't want the entire media to cover the event, but then he has sold the rights to some international media at about 40 crore rupees. So that could be the reason why he is not allowing us to really take a sneak peek at the wedding. We are just spying here as everyone else is. And as far as the guest list is concerned, of course, Amitabh Bachchan's shadow, Amar Singh, would definitely be there because he is the marriage manager, as we heard. Other than that, Karan Johar, close friends such as Shubhra Roy, Anil Ambani and Tina Ambani would be there. And a few people from the film industry, the Khers, Kiran Kher, Anupam Kher, are expected here. The list is very small. About only 100 guests have been invited. A few from Aishwarya's end, a few from Amitabh's, and of course Jaya and Abhishek's friends would be there. So basically the event, it's a very closely guarded event, a private affair, as we all know. Knowing Big B, we would be expecting, we know that it had to be such an event. And other than that, since Teji Bachchan is in hospital, he did say that it would be a low-key affair. But anyways, we are enjoying it thoroughly, and in fact, the traffic, every car that is passing by is stopping here for a minute or two to take a glimpse, to take a look of the entire place, how the celebrations are happening.
Fans have come from Allahabad, from MP, from Amritsar. They are about to do some crazy things. As you just saw, that Sadhu would be standing for 12 years. There was a fan who had come up with a poster of Abhishek and Aishwarya from MP just to witness this event and just to gift them that poster. So, overall, well, that's all the Fans, hold on to your broken hearts. Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai now man and wife. Kajol, Ajay Devgan, Preeti Zinta, Sachin Tendulkar, the A-list enjoyed the big Bollywood wedding. And like father, like son, a look at Amitabh and Jaya's wedding. So right, there it is. The final day, it's finally over, it's finally happened. We're just waiting for a few more hours, and if you hear a collective sigh of relief, it will come from the media. In the meantime, though, it's been an interesting day with every move of the happy couple dogged from step to step. Uday Jhala was, of course, tracking it all the way. Uday, what were some of your more interesting, insightful observations? Well, Anisha, firstly, I just want to start by saying that everybody is talking about the media having no access to the wedding. But by the look of you, it looks like you've had quite more than your share of Shaadi Ka Laddu. Are you sure you didn't sneak in through the back entry? Well, actually, I did. I wanted to just see what the buzz was all about. So we tried to sneak in, got a few shots of some general figures moving around, and then were, alas, hustled away. But as I said, it's been an interesting day, and everyone's sort of here in fine form. Fans have come, they've all dressed up, and I must say it's nice to see Uday that you have as well. Yeah, I know, obviously I'm not quite dressed for the wedding, but I always anticipated myself to not be invited for this big one. But anyway, what was the day like? I mean, it just had everything. It was so hectic this day that I swear to God, there were like riots on the road. From lathi charges to stampedes. I mean, it's a miracle that none of us got majorly injured. So let's take a quick look at what's the latest activity that's been happening from Pratiksha so far. Well, the cat calls that you might be hearing are usually a sign that someone's stepping out. And if you think these are shrill, if you think there's a buzz around me, which I hope you can hear since I'm talking so much about it, you should have heard what happened when the Bharat finally arrived. Abhishek Bachchan getting jiggy with it. As the gates of Jalsa opened to let Junior Bachchan's Bharat come through, he appeared dressed in a cream-coloured sherwani, designed by friends Abu Jani and Sandeep Khosla. Abhishek looked every inch the traditional bridegroom sitting on the horse with nephew Agastya. Amitabh Bachchan did not seem happy that the media got a full view. The angry young man of the late 70s immediately asked that buses obstruct the view. But even then, ever a gentleman, Abhishek Bachchan did not forget his female fans. And this one was for them. Well, that was what happened when the Bharat stepped out of its starting point, which was, of course, Jalsa. When it arrived here, the view was initially blocked, but fortunately, when the vast cavalcade of buses opened up, there was certainly a sight to see. Finally, the wait was over. 4 deluxe air-conditioned buses
arrived at Pratiksha, the venue of the Aishwarya Abhishek wedding. As the family alighted from the buses, Amitabh Bachchan and Anil Ambani lent a hand to the ladies. Jaya Bachchan, Shweta Bachchan, Pam Chopra and others. And while Abhishek may have managed this era well, nephew Agastya seemed to have a bit of a problem looking ahead. Following him was Abhishek himself, not being able to contain himself. He broke out into an unrehearsed Bhangra step. The Baraat included Karan Johar, the Chopras, Dimple Kapadia and Sikandar Kher amongst others. Well, as you can see, you may think that the party is about to get over with the number of people heading out. But we can tell you that since we're hearing music in the distance and we happen to know that DJ Akhil is behind it, it's unlikely that this party is going to get over any time soon. So these are the first early guests leaving, but I can tell you there's a core coterie inside who are certainly enjoying the evening. But now, who makes up that close coterie? Uday, you were here watching the guests. Tell us some of the people that you spotted. Yeah, well, it was an absolute stellar cast, I can tell you that much. I mean, if you expect me to have a memory and think of everybody, I might fall a little short, but I can tell you it's people like Sanjay Dutt, there was Yash Chopra, Ram Gopal Varma, where do I stop? Preeti Zinta, Kajol. Of course, how can we leave out the Bachchan family themselves? Of course, they were there. But besides that, there were so many more. Sachin Tendulkar was there. There were just a whole long list of people. Anisha, help me out in case I've forgotten anybody. Yes, no, I think you've hit most of the high points. One of the interesting guests was, of course, J.P. Datta, the man behind Umrao Jaan, the film set on which it said Abhishek and Aishwarya, in fact, fell in love. But instead of us talking about it, why don't you take a look? While the Baraat had the film industry's stalwart shaking a leg, those who missed the action outside Pratiksha came in time to witness the wedding of the year. Sachin Tendulkar seemed to make the most of his rest time prescribed by the BCCI. Though Ajay Devgan was part of the Baraat, Kajol and her sister Tanisha arrived later. And Preeti Zinta came with boyfriend Ness Wadia. Could this be the next big wedding in the making? Some of their friends were too tired of the 3-day festivities to stay for too long. Okay, so well, you saw a little bit of the long line of guests that arrived at Pratiksha, but what's actually happening behind those walls? I mean, we can only speculate as to how this wedding of the century is unfolding before, well, not before our eyes, but before the eyes of all the guests that are there. Anisha, what do you think's happening behind those walls? I mean, what are the kind of wild ideas that you think might be going on behind that? Well, at a guess, I would imagine that there are more than a few filmy flourishes. I mean, come on, we're expecting some pretty major Bollywood moves, and as I said, you know, there is Akhil playing over there, so we're expecting, you know, the usual chart busters, probably some of their hits. But again, as you said, it's only up to us to speculate. Even though we've been trying frantically to dog their every move, including every moment, whether it's a car arrival or not, even if we could barely see the bride. Now, we've heard of coy brides, but we have to say, since we've yet to see even a glimpse of Aishwarya, maybe it's taking it a little far. This is the only glimpse of Aishwarya Rai to be seen in the last 3 days.
True to Big B's wishes, the family wedding has been shrouded in secrecy. The only indication that Aishwarya Rai left her parental home for Pratiksha mid-afternoon on Friday were the flower decorations on the Mercedes. The gates to Pratiksha closed as soon as the car entered the driveway, giving the bride-to-be all the time to get ready for her knight in shining armour. Well, Anisha, as you can see, we didn't quite get a glimpse of Aishwarya Rai, though we did see Abhishek Bachchan on his horse at that time. Again, his face was covered, so we're yet to see the expression on the happy couple's face. I mean, after all, this is the biggest wedding, the two biggest superstars in the business, from the biggest family. I mean, we want to see what they look like a little bit, don't you? What do you think the expressions in their faces are like? Well, if I were to hazard a guess, I'd like to assume they were happy. Having said that, right now I'm going to shift back to the scene because in case you were wondering about the hustle and bustle that was happening around me, every so often you will see this this group of frantic fans running up and down, and unfortunately, as I can attest to, knocking down anyone who comes in their way. But then again, it's hard to blame them because just like you and me, all they're in search of is that that perfect shot of their favorite stars. Oh, there. Yeah, well, as you can see, Anisha, everything seems to be happening behind you. Of course, there's absolutely nothing going on back here. But a little earlier, in fact, Sonali Bendre had performed a special puja, which came straight out of these gates. The first glimpse of activity spotted at the Bachchan Bungalow, Jalsa, in the morning. Sonali Bendre, along with husband Goldie Behel and son and a few other friends and family members, went to the Bachchan's neighbor's house. All this for a special puja apparently done by the bhabhi of the house. As you know, we've run through a list of all those people who have shown up, but of course another equally interesting list is those who didn't, isn't it, Uday? Yeah, well, we're going to give you a look at some of the people who are supposed to come, maybe, but who we're going to give you a look, basically, at the lookalikes of some of the famous faces who didn't come. Already you've got one right here because... On this particular evening, we're of course talking about Pratiksha, where Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai have finally taken the plunge. As you can see, there's a whole, just rows and rows of waiting media, hoping to get that one shot of the couple who are finally got married. As you can see, it's getting a little frantic over here, so I'm going to ask Uday, who actually was there for the Liz Hurley Arun Nair wedding, also one shrouded in secrecy, whether this one seems to have been tougher yet. Okay, Anisha, I don't exactly hear the question because there are people, I think, screaming behind you. But I know you said something about the Liz Hurley wedding and the mad media madness that went with that as well. Yes, I think I'm becoming a bit of a wedding specialist right now. I saw the Liz Arun wedding in Jodhpur, and I tell you, that wasn't just the Indian media, that was the international media as well. People are going just crazy. They were stampeding the security there. And I thought that was bad till I came and saw Abhi Ash, of course. I mean, today was absolute madness. I mean, who knows? In the last few years, in fact, just over the last few years it's been, since this whole media explosion, it seems like channels are just mushrooming like every single day. I mean, you go for a shoot one day and there are like 500 channels around you.
back, I mean, like 4, 5, 6 years ago, there were hardly that many channels. So where do you think this whole thing suddenly came for, this suddenly explosion? Aishwarya, I mean, sorry, not Aishwarya, Anisha. Why, thank you, Abhishek. It's nice that you got the name correct at least. Yes, I mean, I think very much it's about the sort of the sheer number of channels, but also just this ongoing sense of stars insisting on I would say, perhaps in certain cases, unexpectedly stringent privacy measures. I mean, we had 5 or 6 buses coming just to make sure that no one got a shot that they weren't supposed to get. So I think we're also seeing a very strong change in that. And what happens internationally is at least that, you know, some of it goes to the highest bidder. In this case, we don't know if there is a bidder at all. Go there. हेतल गंगर, जी न्यूज़, मुंबई। इसके पहले जिस शादी की एक एक बात जानने के लिए लोग बेताब थे, वो शादी मुंबई में बड़ी धूमधाम से हुई। अभिषेक और ऐश्वर्या ने प्रतीक्षा में 7 फेरे लेने के साथ जन्म जन्म तक साथ निभाने का वचन लिया। शादी के बारे में लोगों ने जैसा सोचा था, इंतजाम उससे कहीं ज्यादा शानदार थे। छोटी सरकार अभिषेक बच्चन और मलिका ए हुस्न ऐश्वर्या राय की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी में मेहमान भी शामिल हुए और घर के बाहर बिन बुलाए मेहमानों की भी भीड़ थी। हालांकि बिग बी के घर की ऊंची दीवारों के पार मीडिया के कैमरे नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने जो भी देखा उसे बॉलीवुड के दीवानों तक जरूर पहुंचाया। फूल माला सजावट से लेकर ऐश्वर्या के लिए आई डोली तक हर चीज जो कैमरे की निगाह से गुजरी उसे पूरे देश ने देखा। तस्वीरों से साफ था कि बेटे अभिषेक की शादी की हर छोटी बड़ी बात पिता अमिताभ बच्चन की कड़ी निगरानी से गुजर रही थी। बारात अमिताभ के घर जलसा से चलकर उनके दूसरे घर प्रतीक्षा तक जानी थी। वक्त था करीब शाम के 5:15 का। जलसा के सामने 7 बसें लग गईं। अमिताभ बसों में बारातियों के बैठने का इंतजाम करते दिखाई दिए। घोड़े पर बैठे अभिषेक भी दिखे। भीड़ के चलते जलसा से प्रतीक्षा तक 1 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय हो पाई। यहाँ ऐश्वर्या राय के घर वाले बारातियों के लिए पलक पावड़े बिछाए थे। बैंड का इंतजाम था तो बारातियों के कदम थिरकने से भला कैसे रुकते। प्रतीक्षा के बाहर अभिषेक की बहन श्वेता नंदा, टीना अंबानी, सोनाली बेंद्रे और बाकी बारातियों ने जमकर ठुमके लगाए। शादी में नाचने का अरमान अभिषेक ने घोड़ी पर बैठे बैठे ही पूरा कर लिया। सहबाला बने श्वेता के बेटे ने भी घोड़ी से बैठे बैठे अपनी मामा की शादी का खूब मजा उठाया। नाचने गाने और बारातियों के स्वागत में करीब 15 मिनट का वक्त लगा। 6 बजे बाराती प्रतीक्षा में दाखिल हो चुके थे। बीच बीच में जानी पहचानी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। पिता अमिताभ, मां जया बच्चन, परिवार के सबसे करीबी दोस्त अमर सिंह, सुब्रत रॉय सहारा, अनिल अंबानी, हर कोई अभिषेक और ऐश की शादी की शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा था। बाहर बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला भीतर की एक भी झलक न पाने से मायूस थे। वो इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। इस बीच प्रतीक्षा के भीतर प्रतीक्षा खत्म हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के बंधन में बंध रहे थे। माँ बाप और रिश्तेदार आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने बच्चों को एक दूसरे का बनता देख रहे थे। आखिरकार शाही अंदाज में बॉलीवुड के परिवार नंबर 1 की बहुचर्चित शादी आशीर्वाद और शुभकामनाओं के बीच पूरी हो गई। बॉलीवुड की इस जोड़ी नंबर 1 की खुशहाल जिंदगी के लिए हर चाहने वाले ने ऊपर वाले से यही दुआ की कि ये जोड़ी सलामत रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों।
लामेर से ऐश अपने फूलों से लदी मर्सिडीज में सवार होकर पिया मिलन के लिए प्रतीक्षा पहुंची। उन्हें मालूम था कि उनकी प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। उनके सपनों का शहजादा उनसे 7 जन्म का नाता जोड़ने आ रहा था। शुक्रवार की शाम बांद्रा हिल्स के लामेर अपार्टमेंट से निकली एक सजी सजाई कार, बिल्कुल नई, बेहद चमचमाती, सजाव सिंगार ऐसा कि किसी दुल्हन को भी मात दे दे। आखिर ऐसा हो भी क्यों नहीं जब उस कार में बैठी हो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, और वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि शादी के शानदार जोड़े में। कार पर रंगीन शीशे चढ़े थे, जिसके चलते ये देखना तो मुश्किल था कि हसीनों की मलिका आखिर किस तरह कयामत ढा रही है, लेकिन जिसकी खूबसूरती का डंका पूरी दुनिया में बज चुका हो, वो ऐश्वर्या राय अपने घर लामेर से एक नए सफर की तैयारी के लिए निकल पड़ी। कर्नाटक के राय परिवार की इस लाडली के ब्याह के इस मंगल मौके पर मुंबई के बांद्रा इलाके में ऐश्वर्या का घर लामेर भी किसी दुल्हन से कम सजा धजा नहीं था। आखिर वो घड़ी भी आ गई जब ख्वाबों से भी खूबसूरत ऐश्वर्या अपने पिया अभिषेक के संग 7 फेरे लेने लामेर से प्रतीक्षा चली। रूप की इस देवी को अपने दिल के राजकुमार तक पहुंचाने के लिए खास गाड़ी, जी हाँ, रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से सजी ऐश्वर्या की अपनी पसंदीदा मर्सिडीज गाड़ी के शीशे पर चढ़ी थी काली फिल्म, ताकि रूप की रानी को किसी की नजर न लग जाए। ऐश की गाड़ी के साथ था कई गाड़ियों का काफिला। दिलवर का दीदार करने जा रही विश्व सुंदरी के इस सुहाने सफर में साथ थे उनके खास और करीबी। लामेर से ऐश्वर्या पहुंची प्रतीक्षा। दूसरी तरफ जलसा से उनके दूल्हे राजा अभिषेक भी गाजे बाजे के साथ प्रतीक्षा के लिए चल पड़े। जहां सैकड़ों लोगों के बीच ऐश अभिषेक का दिल बोल उठा, जी हाँ, हम बनी हैं एक दूजे के लिए। नीरू शर्मा के साथ गरिमा कुमार, मुंबई आज तक। वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर बॉलीवुड की शाही शादी की खास झलक पर। देखते रहिए विशेष। शाम ढली और आ गई वो मंगल बेला जब दो प्यार भरे दिल शादी की डोर में बंधकर 7 जन्मों के मीत बन गए। अभिषेक और ऐश्वर्या के मंगल विवाह में जहां दक्षिण भारतीय परंपराओं के रंग थे, वहीं ठेठ इलाहाबादी रिवाजों के ढंग भी थे। और जब दूल्हे की मां बंगाली हो तो फिर वहां के संस्कार होंगे ही, यानी हर परंपरा का प्यार और आशीर्वाद मिला इस प्यारी सी जोड़ी को। से ज़मीं लगा। सुनहरे सपने सच हो गए, मिल गई प्यार को मंजिल। वो पल आ ही गया जिसका इंतजार एक अरसे से था। बॉलीवुड का शहजादा मलिकाए हुस्न के साथ शादी की डोर में बंध गया। रियल लाइफ की ये जोड़ी आखिरकार रियल लाइफ में भी एक हो ही गई। ऐश और अभिषेक की शादी के लिए प्रतीक्षा को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। बंगले के लॉन में भव्य मंडप तैयार किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के 11 पंडितों ने जूनियर बच्चन और विश्व सुंदरी के मंगल विवाह के संस्कार संपन्न कराए। वाराणसी, जबलपुर, मदुरै और श्रृंगेरी से आए जाने माने पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक ने अपनी महबूबा को जिंदगी का हमसफर बना लिया। विवाह का कार्यक्रम शाम ढलते ही शुरू हो गया, लेकिन सवाल था कि किस तरीके से होगी ये शादी, क्योंकि ऐश कर्नाटक के बंट समुदाय की हैं, तो बिग बी ठेठ इलाहाबादी। उधर दूल्हे की मां जया भादुड़ी बंगाली संस्कारों में सांस लेती हैं। लिहाजा तय किया गया कि सारी परंपराओं का मान रखते हुए शादी संपन्न कराई जाए।
बंट परंपराओं के दक्षिण भारतीय रीति से शादी की रस्म निभाई गई, जिसके लिए खास तौर पर कासरगोड जिले से आम के पवित्र पल्लव लाए गए थे। इसके साथ बंगाली रीति के अनुसार पूजा भी की गई, जिसमें और लोगों के अलावा बांग्ला फिल्मों के मशहूर निर्देशक ऋतुपर्णो घोष भी शामिल हुए। परंपरागत तरीके से हुई शादी के दौरान देवी देवताओं की पूजा भी की गई और फिर हुए वो 7 फेरे, जिनमें बंधकर ऐश और अभिषेक 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। फिर ऐश की मांग में अभिषेक ने भरी सुहाग की लाली, जिसमें छलक रहा था प्यार का सिंदूरी रंग। यानी अभिषेक ऐश की शादी सचमुच बॉलीवुड की मुकम्मल तस्वीर बन गई, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय परंपराओं का खूबसूरत तालमेल था। विवाह की रस्म के दौरान ऐश नीता लूला की डिजाइन की हुई कांजीवरम साड़ी में गजब की खूबसूरत लग रही थीं। इस मौके पर अभिषेक की नानी ने अपने नाती की दुल्हन को सोने का खूबसूरत हार पहनाया, तो चांदी सा रूप सोने की चमक से और भी दिलकश हो गया। पंडितों ने शादी की रस्में पूरी की, वर वधू ने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया और वहां मौजूद सभी लोगों ने दुल्हा दुल्हन को खुले मन से आशीर्वाद दिया। जी भरकर दुआएं दी कि कयामत तक सलामत रहे ये खूबसूरत जोड़ी। नीरू शर्मा के साथ गरिमा कुमार, मुंबई, आज तक। बॉलीवुड की शाही शादी के जलसे पर ये था हमारा wedding featured a series of ceremonies conducted in accordance with Mangalorean and North Indian traditions. In addition, a small puja in accordance with Bengali traditions also took place. Attending the wedding were close friends Amar Singh, Kajol and Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Anil Ambani, Kiran Kher, Sachin Tendulkar, Goldie Bahal and wife Sonali, Karan Johar, Preeti Zinta, Sanjay Dutt and his partner Manyata, Prem Chopra and Manoj Desai. और बहुत अच्छी शादी थी और शायद सेंचुरी की एक ही शादी होगी है। इतनी प्यारी डॉल सी क्यूट लग रही थी। कट ग्लासेस के पूरे गहने पहने हुए थे और इसने हमारे अभिषेक ने बहुत प्यारी शेरवानी पहनी हुई थी। ये बहुत प्यारा माहौल था। दोनों ने बड़ा मैचिंग किया हुआ था, बहुत प्यारा सा मैचिंग, लाइट स्काई ब्लू विथ क्रीम और पूरा जरदोसी वर्क था उसके ऊपर दोनों का। As the VIPs entered the venue of the wedding, they were watched by hundreds and thousands of fans and interested onlookers, including an Amitabh Bachchan lookalike. Earlier in the evening, a visibly ecstatic bridegroom, Abhishek Bachchan, emerged from Jalsa on his way to Pratiksha, which was the venue of the actual wedding. He was dressed in a cream sherwani and accompanied by his nephew, sister Shweta Nanda's son. Riding a mare from Jalsa to Pratiksha, Abhishek too joined in the fun by doing a couple of impromptu jigs for the benefit of the crowd. Bureau Report, headlines today. The big fat Bollywood wedding began with a barat that raised the bar for many a wedding to come. No sooner had Abhishek mounted the traditional ghodi than the baratis got down to some serious dancing. Leading the pack was the groom's sister Shweta Nanda, her husband Nikhil, and in-laws Ritu and Rajan Nanda. Abhishek's close friend director Goldie Bahal and his wife actress Sonali Bendre also ensured that it was an affair to remember. Long-time Bachchan associate veteran actor Danny Denzongpa was also part of the barat. And leading the pack, of course, was Chote Bhaiya Amar Singh with his family. Johar, of course, was by the groom's side throughout. Other celebs adding stardust to the barat were Kajol, Ajay Devgan, Kiran Kher, Ridhima Kapoor, Rishi Kapoor, Anil and Tina Ambani, and Amjad Ali Khan's wife Subha Lakshmi Khan. The stream of A-listers didn't end with the barat. A steady stream of big names was seen entering Pratiksha even after the arrival of the barat. Sachin Tendulkar arrived with his wife Anjali a little later.
actor Anupam Kher too made a late entry. Sanjay Dutt and his girlfriend Manyata, director Ram Gopal Verma and Uddhav Thackeray were the other stars on the guest list. Entertainment Bureau, headlines today. The festivities were on and everyone was in the party mood. From locals to lookalikes, all joined in the celebrations, and needless to say, the invitees were outnumbered by the onlookers. Take a look. Bollywood's biggest wedding of the year. The invitees dressed to kill. Hours before the wedding, Jalsa was just short of looking like a human sea. And the guests, it seemed, were outnumbered by onlookers who were dying to catch a glimpse of Bachchan, Uska Baba or Barati. For everyone, starting from the Dholkiwalas to the Bandwalas, it was a big day. Hereafter, they can boast that they played at the Bachchan wedding. Some stood on trees to get the aerial view, and some nearly fell off. And then there was the Amitabh Bachchan lookalike who was heard saying, "Meri baari kab aayegi?" And clearly, with so many people cramped in such a small space, there was bound to be a clash between the onlookers and the men of the law. Needless to say, the locals soaked in all the filmy masala at Abhishek's wedding, and as bonus, many hogged their 15 seconds of fame. Entertainment Bureau, headline. जबकि बारात जलसा से सजकर वहां पहुंची थी। हालांकि दोनों घरों के बीच की दूरी बमुश्किल 1 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी बारातियों ने बस में बैठकर पूरी की। इस हाई प्रोफाइल शादी में आए हाई फाई गेस्ट की एक झलक पाने के लिए जलसा के बाहर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। अमिताभ ने भी अपने फैंस की तरफ देखकर हाथ हिलाया। शादी की सारी रस्में ठेठ इलाहाबादी अंदाज में मनाई गई। वहीं घोड़ी पर बैठना, दूल्हे की निकासी, बैंड बाजे और बस में बारात। बैंड बाजे वालों ने अभिषेक की फिल्मों के गाने बजाए तो आज मेरे यार की शादी है जैसे सदाबहार गानों पर भी बारातियों को नचाया। बारातियों की तरफ से खासकर कजरारे कजरारे की डिमांड रही। बारात का खास अट्रैक्शन था केसरिया साफे में सजे बाराती। सभी पुरुष बारातियों ने केसरिया साफा पहना था तो महिलाओं ने हेवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज। नाचते गाते बाराती प्रतीक्षा में दाखिल हुए।